How are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter 3, human body, the digestive system and excretory system. Here is some warm-up questions. Name the following. It helps to mix the food particle with saliva, a part of the body that has a specific job to do. Digestive juice produced by the salivary glands. The unwanted waste is expelled through it. We must include this in the diet, make our digestive system healthy. So you can do it by yourself as you already read about these things. Here is, let's know about digestive system, organs of the human digestive system, need for chewing food well and regular bowel movement, importance of water in digestion, excretory system and organs involved, healthy eating habit. How do we get rid to different kinds of waste? Solid waste. After the food is digested, the solid waste that is left out is removed from the body through the digestive system. So बच्चे solid waste क्या है, जब आपका food जो है digest हो जाता है उसके बाद जो solid waste होता है वो किसके through, आपके digestive system के through body से remove किया जाता है. Okay. Here is liquid waste. Our body actually generate a lot of dangerous liquid waste. These are toxic waste products which will circulate in our blood until disposed of. Our body gets rid of it through the urinary system. So बच्चे जो आपका liquid waste है, that means हमारी body में बहुत सारा dangerous liquid waste जो है वो generate होता है, वो toxic होता है और वो पूरी blood में circulate होता है. उस चीज़ को डिस्पोज करने के लिए हमारी बॉडी से बहुत तरीकों से आपका लिक्विड वेस्ट है जो बाहर आता है, जैसे यूरिनरी सिस्टम के थ्रू आप स्वेटिंग करते हैं, वो भी एक लिक्विड वेस्ट है. ओके स्टूडेंट, हियर इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. आवर बॉडी नीड्स फूड टू प्रोवाइड इट विद एनर्जी, vitamins and minerals. However, in order to use food, we must first break it down into substances that the various organs and cells in our body can absorb. This is the function of our digestive system. So बच्चे क्या होता है, जो हमारा फूड है उससे हमें विटामिन, मिनरल, एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. So उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो पहले खाने को ब्रेक करती है डिफरेंट सब्सटेंसेस में, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारी सेल्स बॉडी की उसको एब्जॉर्ब करती हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है. ओके, हियर इज digestive system. The process of breakdown of food into smaller components that can be absorbed into the bloodstream easily is called digestion. Many organs work together and help in the process of digestion. The main organs of the digestive system are mouth, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus or rectum. These are the main body parts of digestive system. So student, digestive system होता क्या है? Digestive system में हमारे food का digestion होता है. Okay, look at this picture. This is the picture of digestive system. Look here, mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. These are the parts of digestive system. Okay. An organ system is a group of organs that work together to perform one or more functions. Each does a particular job in the body and is made up of certain tissues. Here are the major states of digestive system. So बच्चे जो आपका organ system होता है वो क्या होता है? Group of organs होता है जो एक साथ कोई work या कोई task जो है perform करते हैं. Okay? और हर एक आपका जो body part होता है या कोई organ होता है उसका एक particular job होता है. Okay students, here is mouth. Look here, digestion starts in mouth. When food is chewed, it is broken into small pieces that are easier to digest and swallow. Also, saliva produced by the salivary glands is mixed with the food with the help of tongue. Saliva starts breaking down starchy food, potatoes, bread into simple soluble substances. So बच्चे first जो है आपका माउथ में क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है. ठीक है, जब हम फूड को चीव करते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं, वो क्या होता है, इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है. और जो आपके फूड में सलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो सलाइवा प्रोड्यूस्ड होता है और वो मिक्स होता है, वो भी आपके माउथ में होता है.
और जो सलाइवा है बच्चे वो आपका स्टार्ची फूड जैसे पोटैटोज और ब्रेड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है. ओके, हियर इज फूड पाइप, esophagus. Our tongue helps to push food into the back of our throat. Then there are special throat muscles that force the food down into a long tube that leads to our stomach called the esophagus. The muscles push the food along until it gets to our stomach. At the same time, a flap blocks off our windpipe, making sure food doesn't go the wrong way as it can make us choke. This flap is called epiglottis and it works automatically. तो बच्चे जो आपका ईसोफेगस दैट मीन्स फूड पाइप होता है उससे क्या होता है आपकी टंग की हेल्प से जो आपका खाना है वो फूड पाइप में एंटर करता है और वो फूड पाइप से डायरेक्टली आपके स्टमक में एंटर करता है. ओके, और वहां पे एक एपिग्लेटिस नाम का क्या होता है फ्लैप होता है ताकि आपका जो खाना है वो सही पाइप में जाए, दैट मीन्स फूड पाइप में जाए, आपके ब्रीथिंग पाइप में ना जाए. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका खाना जो है फंस जाता है तो वो चोक हो जाता है कि आपके ब्रीथिंग में इशू होता है क्योंकि वो आपके ब्रीथिंग पाइप में चला जाता है. ओके, here is stomach. The next stage is the stomach. Food remains in the stomach for around 4 hours. The stomach is muscular bag that crushes food and contain acids and enzymes for killing bacteria and breaking down proteins into simple substances that our body can absorb and use. सो बच्चे जब आपका स्टोमक होता है वो नेक्स्ट स्टेज होती है डाइजेशन प्रोसेस में और आपका खाना ऑलमोस्ट 4 आवर्स कहाँ रहता है आपके स्टमक में रहता है. स्टमक क्या करता है खाने को क्रश करता है, कुछ एसिड्स मिक्स करता है, एंजाइम्स और बैक्टीरियाज को क्या करता है किल करता है और जो आपकी प्रोटीन्स हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करता है. Okay, here is a small intestine. The first part of a small intestine works with juices from the liver and pancreas to continue to break down our food. The second part is where the food gets absorbed into the small intestine. Look at this picture. This is our small intestine बच्चा. जो आपके small intestine है उसका जो first part है बच्चे वो work करता है, जो juices हमारे liver और pancreas क्या करते हैं secrete करते हैं and जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है बच्चे वो आपके फूड को एब्जॉर्ब करता है. ओके, हियर इज, डू यू नो द सेकेंड पार्ट इज वेयर द फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन. Tiny finger shaped projections called villi line the inside of the small intestine. Villi absorb nutrients molecules. The molecules pass from the villi into blood vessels. The blood take its to all cells of the body. Digestion of food ends up in the small intestine. So बच्चे जो आपकी small intestine का second part होता है उसमें एक structure होती है that is villi और वो क्या करते हैं आपके food को absorb करने में help करते हैं और जो आपका न्यूट्रिएंट होता है वो ब्लड वेसल्स को पास करते हैं और फिर ब्लड जो आपका है वो कंप्लीट बॉडी में आपकी जो है पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है उनको पास करते हैं. ओके, और यहाँ पे आपका डाइजेशन प्रोसेस एंड हो जाता है. ओके स्टूडेंट, हियर इज, do you know the liver is the only organ of the body which has the capacity to regenerate itself completely even after removed almost completely. That means बच्चा लीवर आपकी बॉडी का वो ऑर्गन है जो सिर्फ खुद को रीजनरेट कर सकता है. बाकी आपका कोई भी ऑर्गन रीजनरेट नहीं होता है बट लीवर खुद को रीजनरेट कर सकता है कंप्लीटली. दैट मीन्स अगर वो बिल्कुल रिमूव हो जाए उसके बाद भी लीवर खुद को रीजनरेट कर सकता है. ओके, here is large intestine. Undigested food that the body doesn't need or can't use is sent to the large intestine. Here water is absorbed and the solid left behind. It called feces. The large intestine part of both the digestive and excretory organ system. सो बच्चे जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या जाता है, जो खाना या जो चीज़ें हमारी बॉडी की नीड नहीं है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पास होते हैं. और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है बच्चा, आपकी जो वो वेस्ट फूड होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे वाटर को एब्जॉर्ब करती है और बाकी जो आपका है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, ऑर्गन सिस्टम जो आपका है उसके थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. हियर इज अपेंडिक्स, रेक्टम, कॉलन. Okay, these are the parts of your large intestine. Here is anus. Wastes are thrown out of the body through the anus or rectum.
और जो आपकी बॉडी का वेस्ट है वो किसके थ्रू बाहर आता है बच्चा, एनस और रेक्टम के थ्रू. ओके, हियर इज, डू यू नो, इन अ ह्यूमन बॉडी द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 21 फीट एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज 6 फीट लॉन्ग. सो बच्चे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन 21 फीट लॉन्ग होती है और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो 6 फीट लॉन्ग होती है. ओके, हियर इज the liver and pancreas. Look at this picture. This is liver, gallbladder and pancreas. The liver and pancreas do a lot to help the digestive system. Both work with the small intestine. The liver provides bile which is stored in the gallbladder that helps to break up fat into smaller bits. The pancreas provides additional enzymes, pancreatic juice, to help digest all sorts of food. The liver also processes the digested food from the blood before it is sent to various places of the body to be used. So बच्चे आपका जो लीवर और पेनक्रियास है वो डिफरेंट टाइप के जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं और जो जूसेस आपकी जो बॉडी जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में. ओके, और ये सब चीज़ें वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. जैसे आपका पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियाटिक जूस जो है प्रोवाइड कराता है. ठीक है, वो किस में हेल्प करता है, आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. जो आपका लीवर जो आपका जूस प्रोवाइड कराता है उससे जो आपका फैट है वो स्मॉलर बिट्स में जो है वो ब्रेक हो जाता है. तो दीज आर द थिंग्स जो आपके लीवर और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास की हेल्प से हमारे डाइजेशन में होती है. ओके, हियर इज वी हैव चिकन मीट. As we already read about these things, so you can do it by yourself. Here is an activity. Pretend you are a piece of pizza. Describe your trip through the digestive system from the very first bite to the last ending. In order to get full credit, you must include an opening sentence. Follow the digestive system in order from start to finish, using details to support each of the 6 parts. Use vocabulary from this unit. Be descriptive and give details about where you are. Include a closing sentence. So बच्चे आपको क्या करना है, आपने सपोज करना है कि you are a piece of pizza और आपने बतानी है वो जर्नी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ से वो एंट्री करेंगे, क्या फिर होता है. जो आपकी बुक में अभी हमने रीड किया है ये 6 जो पार्ट्स हैं इन सबको इंक्लूड करना है. यहाँ से वो कैब आपको यूज करनी है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग सेंटेंस आपको देना है. सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. Here is the excretory system. Excretion is the process of removal of waste products from the body. The main system in the body responsible for excretion is the urinary system. So बच्चे जो आपका excretion process होता है that is removal of wastes from our body. और उसका जो main system या main body part जो responsible है that is urinary system. Here is, it removes most of wastes from the body in the form of urine. Other excretory organs are the skin and the lungs. The skin remove waste in the form of sweat and the lungs remove carbon dioxide. So बच्चे जो आपका excretory system है वो किसकी फॉर्म में वेस्ट को रिमूव करता है, यूरिन की फॉर्म में. लेकिन जैसे आपके स्किन और आपके लंग्स, स्किन आपकी स्वेट की फॉर्म में वेस्ट को रिमूव करती है और आपके लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में. ओके, लुक हियर, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. दीज आर द बॉडी पार्ट्स जो आपकी हेल्प करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में. Okay, here is the urinary system. The urinary system starts with 2 bean-shaped organs called kidneys. They separate waste and excess water out of our blood for removal. When blood passes by a kidney, it is clean. The kidney then reabsorbs any known waste material trapped with the waste. The leftover waste product is called urine. So बच्चे क्या होता है, आपकी जो बीन शेप जो ऑर्गन है दैट इज किडनी, और किडनी से क्या होता है आपका ब्लड जो है क्लीन होता है और जो वेस्ट वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, दैट इज वो आपकी लेफ्ट ओवर वेस्ट यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर आता है. ओके, हियर इज व्हेन all that's left is urine, it will leave the kidney through a tube called the ureter. The ureter connects to the urinary bladder, an organ which stores urine until the body is ready to get rid of it.
When there is enough urine in the bladder, it will exit the body through another tube called the urethra. So बच्चे क्या होता है कि जो आपका किडनी है उसमें एक ट्यूब होती है, दैट इज यूरेटर ट्यूब, जो कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर को किडनी से, और वो ट्यूब स्टोर करती है यूरिन को तब तक जब तक आपकी बॉडी से वो बाहर नहीं आता है, ठीक है। और वो जब आपकी बॉडी से बाहर आता है, एक और आपकी ट्यूब होती है दैट इज यूरेथ्रा, जो कनेक्ट होती है आपकी यूरिनरी ब्लैडर से। ओके, हियर इज gaseous waste. Finally, there is a simple kind of waste removal system that we do every few seconds. Breathing. When we breathe out, we are getting rid of carbon dioxide. This is a waste product generated by metabolism in our cells. After being made by our cells, it dissolves in the blood and moves to the lungs. This is converted into a gas so that we can exhale it. So बच्चे गैसियस वेस्ट क्या है? जब हम ब्रीथ इन करते हैं वी टेक ऑक्सीजन, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और वो आपका गैसियस वेस्ट है। होता है कैसे है बच्चा कि जब हमारी जो बॉडी की जो सेल्स हैं, जब वो मेटाबॉलिज्म होती है, जब आपकी सेल्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करती है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में मिक्स होकर लंग्स तक आती है और फिर वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो वो हमारी बॉडी से बाहर आती है। ओके, हियर इज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। फॉर स्टेइंग हेल्दी, ईट अ बैलेंस्ड डाइट with lot of fiber as it helps to prevent constipation. So आपको हेल्दी रहने के लिए एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो। ओके, the more you chew your food, the better it will be broken down, which will help in the digestive process. जितना ज़्यादा आप अपने खाने को चबाते हैं वो उतना ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है, उतनी हेल्प होती है आपके डाइजेशन प्रोसेस में। Do not drink between meals as it may lead to slower digestion as the digestive juices are diluted by the liquids consumed. You should drink the water before meals 15 minutes prior to about 30 to 40 minutes after meals. So बच्चे आपको खाना खाते हुए बीच में पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो पानी के साथ मिक्स होकर डाइल्यूटेड हो जाते हैं और फिर वो वर्क कम कर पाते हैं, ठीक है। या तो आप खाना खाने से पहले पानी पिए या खाना खाने के बाद। Avoid overeating as it puts lot of pressure on the digestive system. Do not distract yourself while eating. Concentrate on your food and put away your phone. Turn off the television or computer or tablet. Close the book in front of you and just sit down and eat. So बच्चे आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए और जब आप खाना खाते हैं तो आपको अपने खाने पे फोकस करना चाहिए, टीवी या फिर आपका कंप्यूटर या फिर फोन ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। Do not skip your meals and have food at fixed times. आपको अपने मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए और खाने को फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। ओके, Rest a while after eating as your stomach needs oxygen to digest the food. If you start playing immediately, other organs take away oxygen. और खाना खाने के एकदम बाद आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए क्योंकि खाने को डाइजेस्ट होने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, और अगर आप खेलना शुरू कर देते हैं या कुछ और काम तो जो आपके अदर ऑर्गन्स हैं वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ओके, फूड शुड बी हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड एंड स्ट्रीट फूड शुड बी अवॉइडेड एज इट लीड्स टू हार्मफुल डिजीज। वॉश योर हैंड्स बिफोर हैविंग फूड और यूज सैनिटाइजर। Rinse your mouth properly after eating. Make a habit of going to the washroom every morning as the body needs to get rid of the waste. For a healthy digestive system, it is also important to urinate at regular intervals. So बच्चे आपको सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, आपको सुबह उठ के फ्रेश होना चाहिए। These are the some things जो आप डेली लाइफ में कर सकते हैं और आप हेल्दी रहेंगे। Okay, here is we have check and mate. As we already read about these things, so you can do it by yourself. Here is what we learn in this chapter. Now we will discuss it in a nutshell. Here is the breakdown of the food into small pieces is called digestion. Food has to be digested before it can be used of the body. So जो food आपके small pieces में break down होता है that is digestion, और आपकी body को digested food की ही need होती है। Okay. Digestion starts in mouth, continues in the stomach and is completed in the small intestine. Digestion mouth में start होता है, stomach में continuous और small intestine में खत्म होता है।
The digested food is absorbed in the blood in the small intestine. The undigested food is thrown out of the body through the large intestine. और जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्प से आपकी बॉडी से बाहर आता है. ओके. The salivary glands, liver, pancreas are few organ that secretes digestive juices. So बच्चे ये कुछ organs हैं जो digestive juices secrete करते हैं. The excretory system includes the urinary system, skin and the lungs. So आपके excretory system में बच्चा urinary system, skin and lungs होते हैं. Okay. The urinary system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and urethra. So these are the parts of urinary system. Urine is formed inside the kidneys and is stored in the urinary bladder till it is thrown away through the urethra. So बच्चे यूरिन क्या होता है, किडनी में फॉर्म होता है और स्टोर होता है यूरिनरी ब्लेडर में तब तक जब तक यूरेथ्रा की हेल्प से वो बॉडी से बाहर नहीं आता है. Healthy eating habits should be maintained for healthy digestion and excretion. So healthy eating habits क्यों होनी चाहिए, अच्छे digestion और excretion के लिए. Okay. Here is we have some keywords: toxic, poisonous, circulate, move continuously or freely through a closed system or area, choke, have severe difficulty in breathing because of constricted or obstructed throat or lack of air. Okay, here is enzymes, chemical substance that is found in living creatures which produces change in other substances without being changed itself. Okay students, thank you students, we will meet again in the next chapter.